Good morning students. How are you all children? Today we are going to start revision of our subject science. We are going to solve different worksheets, right children? And that worksheets will be framed from your notebooks, session works and your textbook. So please do refer all the notes, notebook work and textbook for attempting this worksheet, right? Let's start with the worksheet. Chapter number 1, Nutrition in Plant. What is called green colored pigments occurring in leaves of plant? जो leaves के अंदर green color pigment होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Hemoglobin, chlorophyll, xanthophyll and melanin. It is called as chlorophyll. Which of the following is not a parasitic animal? Mosquito, housefly, bedbug, leech. So housefly is not a parasitic animal. Which of the following are the end product in the process of photosynthesis? Carbon dioxide and water, starch and carbon dioxide, carbohydrate and oxygen, oxygen and carbon dioxide. So carbohydrate and oxygen are the end products of photosynthesis. Which organism prepare their food by themselves? Green plant, parasites, animals, humans. So green plants prepare food by themselves. Which of the following plants obtain its nutrition from dead matter? Bamboo, cuscuta, pitcher plant and mushroom. So mushroom gets nutrition from dead metals. Define the following. Nutrition. A process of taking food by an organism and its utilization by the body is called nutrition. जो फूड हम खाते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म फूड खाते हैं उसे अपने बॉडी के लिए यूटिलाइज करते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं. फोटोसिंथेसिस, अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर द सिंथेसाइज their food in presence of sunlight and with the help of chlorophyll is called photosynthesis. photosynthesis क्या होता है? जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज करके किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो प्रोसेस होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सेप्रोट्रॉपिक प्लांट, a plant that obtain nutrition from dead and decaying matter is called saprotropic plants. जो एनिमल्स डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसे हम सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं. हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन प्लांट और एनिमल्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स. यानी जो मोड है न्यूट्रिशन का उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं खुद के फूड के लिए, दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. होस्ट, एन ऑर्गेनिजम्स इन विच पैरासाइट डिपेंड्स फॉर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ए होस्ट. An organisms on which parasite depends for nutrition is called a host. यानी जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट पे डिपेंड होते हैं खुद के न्यूट्रिशन के लिए उसे हम होस्ट कहते हैं. What is the function of green pigment? The function of green pigment is to absorb solar energy from sunlight for photosynthesis. Right? तो green pigment का फंक्शन क्या होता है लीव्स में कि वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट एंड फॉर्म सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. वेयर आर द फंगी फाउंड? फंगी आर फाउंड ऑन द स्टेल रोटी, स्टेल ब्रेड, पिकल्स, लेदर आर्टिकल्स, मॉइस्ट क्लोथ्स एक्सेट्रा. ये सब चीज़ों में हमें फंगी दिखती है. फ्रॉम वेयर डू ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड? ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम plant or other animals. What is starch? Starch is kind of carbohydrate
It is a complex form of carbohydrates, right? So starch is one kind of carbohydrate. वो एक carbohydrate है. It is complex form of carbohydrate. ये जो starch होता है वो carbohydrate का complex form होता है. Write chemical equation of the process of photosynthesis. Carbon dioxide plus water in presence of chlorophyll gives carbohydrates and oxygen. यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं और वो केमिकल इक्वेशंस हैं, यानी उसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन. स्टेट ट्रू और फॉल्स. गार्ड सेल्स अकर अराउंड द स्टोमेटा ऑफ लीफ. ट्रू. गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमेटा और लीफ के नज़दीक में होते हैं. ग्राम, बीन्स, पीज, मूंग एक्सेट्रा आर लिग्यूमिनस प्लांट. इट इज ट्रू. Root is known as kitchen of plants. False. Like animals, plants are heterotrophic. False. Explain giving scientific reason. Leguminous plant do not need nitrogen fertilizer. ये जो leguminous plant होते हैं उन्हें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है. क्यों? ग्राम, पीज, मून, बीन्स एक्सेट्रा आर leguminous plant. Rhizobium bacteria live in the roots of leguminous plants. Rhizobium bacteria can take atmospheric nitrogen and convert it into simple form substance. To this, nitrogen components are not added in our plants. Plants do not need nitrogen fertilizer. So this is the reason why leguminous fertilizers are not required by them. The association of certain fungi and roots are very important for the tree. तो उसका एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी होता है. They gives, first important thing is they give us shadow. Whenever we are tired or hungry, right? So that shadow will help us. Match the following. Cuscuta, saprotropic plant. Mushroom is C. Insectivorous. Mushroom is beep. Match the following. Cuscuta, it is B. Parasitic plant. Pitcher plant is C. Insectivorous plant. Mushroom, D. Saprotropic plant. Algae, A. Autotrophic plant. Give point of difference between algae and fungi. They are autotrophic. Chlorophyll is present in it. And here fungi, they are heterotrophic, that is saprophytic or parasitic, and chlorophyll is absent in it. Answer the following in 3 to 4 sentences. Answer the following in 2 to 3 sentences. How are fungi beneficial and how are they harmful? Benefits of fungi are as follows. Yeast and mushroom are used in food. Fungi decompose dead materials, right? So what they do, they how they decompose? First they get buried into the soil, right? Okay. Yeast and mushroom are used in food. Fungi decomposes dead material.
Certain fungi are used as a source of antibiotic. Penicillium fungus is used to obtain penicillin antibiotic. Now there are many fungus which are used as medicine also. They are used also a type of source, and a pendulum force. You know children, everyone, that how pendulum is working, right? So Penicillium fungus is used to obtain penicillin antibiotic. Fungi are harmful in following ways. Some fungi cause disease in plants, animals and humans. Fungi spoil edible item such as pickles. આપણે જેને ફૂગ કહીએ છીએ, right? Fungi means food. So that is coming in our pickles also when you remove after many days. You must have seen children, right? Okay, next. What is symbiotic relationship with an example? Two organisms live together and share shelter and nutrients. This is called symbiotic relation. The relationship between both organisms are beneficial to each other. For example, lichens show symbiotic relationship between chlorophyll containing partner algae and a fungus. Fungus provides shelter, water and mineral. Also mineral algae, water and mineral algae. In return, the algae provides food. यानी जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड पे डिपेंड होता है, राइट? लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. यानी कुछ एनिमल्स साथ में रहते हैं और साथ में खाना शेयर करते हैं. दे आर कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. Write short note on saprophytic plant. Fungi have a different mode of nutrition. The secret they secrete digestive juices on dead and decaying matter and convert them into a solution. वो क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग जूसेस जो होते हैं उसे वो कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूशन में. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सच सॉल्यूशन. सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. It is called saprotropic nutrition. A plant which takes in nutrients from dead and decaying matter is called saprotroph. Yeast, mucor, mushroom, etc. are saprotropic plant.